Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Noorallah. Welcome to all viewers of Madani channel in our silsila Learn Quran. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the summary of Hadith Pak is, who recites durood upon me in abundance, I would be the intercessor for him on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, in this silsila continuously we are learning some verses of the Holy Quran, and in the last silsila we learnt about first 3-4 ayat of Surah Fatiha. Inshallah Azza wa Jal, from the next ayah today we will try to learn more. So make good intentions, keep your pad, copy, whatever you have to write down Madani pearls with you. So first of all, we should make good intentions. The more good intentions you will make, the more blessings you will get, inshallah Azza wa Jal. So first of all, we can make the intention that for Rizai Ilahi, to please Allah Tabarak wa Ta'ala, we will see this whole silsila. Whatever would be taught in this silsila, inshallah Azza wa Jal, we will try to act accordingly. So in the last silsila, we learnt about Surah Fatiha, the starting some ayat. Allah Tabarak wa Ta'ala says in the next ayah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een. We worship you alone and beg you alone for help. In this ayah, first Allah Tabarak wa Ta'ala said about worship. So first of all, we should know, and this is the belief of each and every Muslim, that there is only one worthy for worship, that is Allah. And this is the basic belief, that we worship only Allah Tabarak wa Ta'ala. And this is a very basic difference in between a Muslim and non-Muslim, because there are too many people, they think that we can worship many gods, they have many bad ideas in their minds. Every nation, every sect, they have their own imagination about the God. But as a Muslim, this is very important for us, that only we worship Allah Tabarak wa Ta'ala. So Iyyaka na'budu, we claim and we accept that we worship only Allah Tabarak wa Ta'ala. So the sigha, the word which is used here, that is for plural. Iyyaka na'budu, we worship you alone. So ulama kiram say that a person who is reciting this verse, he is wahid, he is one. But why he is telling and he is reciting with the plural word na'budu? He is not telling that I worship you alone. We say we worship you alone. So there are too many things about this. Only one Madani pearl I would like to share with you, that when a person he is worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, so there is an imagination in his mind that I'm very weak, my worships are not up to the mark. So, O Allah Tabarak wa Ta'ala, I'm not presenting only my worship in your court, but there are too many pious people, there are too many muttaqi people, so their worships are accepted in your court. So by the blessings of those pious people, please accept my worship as well. So this is the mindset there. And
worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, this is the goal of our life. Like in another ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala has explained the goal of our lives. And He said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The summary of this ayah is, I have created the jinn and men for this, that they may worship me. So this is the goal of our life. This is the basic thing. This is the foundation of our lives, that we are Muslims and Allah Tabarak wa Ta'ala has created us only for His worship. So a person who worships Allah Tabarak wa Ta'ala, it means he is fulfilling the purpose of his life. And if a person, he doesn't worship Allah Tabarak wa Ta'ala, that means he is not fulfilling the purpose for what he was created. So please make the intention that inshallah Azza wa Jal, whatever is obligatory for us, first of all, we will think about that and we will fulfill all the requirements of those all worships. After that, nawafil, mustahabbat, mubahat, there are too many things to do. So inshallah Azza wa Jal, we will perform nawafil and other things as well. तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बंदों को उसकी इबादत के बारे में इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु, और इसमें हमारे अकीदे का भी बयान है कि ओ अल्लाह तबारक व ताला, या अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरी ही इबादत करता हूँ। इसमें हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, और हम गोया के इब्तिदाए कुरान ही के अंदर ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि या अल्लाह हम मुसलमान हैं, हम तुझ पर ईमान लाए और हमारा ये ईमान है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत की बड़ी अहमियत है और इबादत ही हमारा मकसद हयात है। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना है। उलमाए किराम ने यहाँ पर बहुत कुछ बयान किया। एक बड़ी ही प्यारी बात जो मैं आपसे बयान करना चाहूँगा कि कहने वाला अकेला है, वाहिद है। होना ये चाहिए था कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर फरमाया हम तेरी इबादत करते हैं। जो हमें तालीम दी गई, नअबुदु जमा का सीगा है। इसकी वजह उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदा ये तिलावत करे, ये आयत करीमा पढ़े, तो उसके जहन के अंदर ये हो कि या अल्लाह मेरी इबादत तो नाकिस, मैं कमज़ोर, मेरी इबादत इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में पेश की जाए, लेकिन फ़कत मैं अकेला अपनी इबादत को तेरी बारगाह में पेश नहीं करता, बल्कि तेरे मकबूल बंदों की इबादतों के साथ अपनी इबादत को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। तो इस सदक़े से, उनके वसीले से, उनके तुफ़ैल से तू मेरी टूटी फूटी इबादत को भी कबूल फरमा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आया, व इय्याका नस्तईन, एंड वी बेग यू ओनली फॉर हेल्प। इस्तिआनत, टू आस्क फॉर हेल्प, टू बेग for help to someone. So we claim, and this is our iman and aqidah, that Allah Tabarak wa Ta'ala, He is the real helper. Whoever helps us, in fact, that help is gifted by Allah Tabarak wa Ta'ala. So He is the one who helps the poor, who solves all our problems. He is the one. When we are in trouble, we ask for help. And He is the one, whenever we need something, we should ask Him. Like in another ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala said, Ud'uni astajib lakum. O people, you ask me, I'll accept your dua. You should ask for dua, I'll accept. You should pray in my court, I'll accept your prayers, your supplications, your dua. So actually, in reality, Allah Tabarak wa Ta'ala, He is the real helper. And this is our iman, this is our belief, that nobody else, no one else can help anyone without the granted permission, without the granted power of Allah Tabarak wa Ta'ala. So there is a misconception, I would like to clarify that as well. Some people, they think that when Allah Tabarak wa Ta'ala said, Iyyaka nasta'in, and we claim that we ask for help
to Allah Tabarak wa Ta'ala. So why we ask to the other people for the help? For example, to Anbiya, Awliya, Salihin or anyone else. So there is a clarification in between these two things. So keep in your mind. In fact, in reality, Allah Tabarak wa Ta'ala, He is the real helper. And we say, as per terminology, that bizat He helps. And the other people, like we ask Anbiya Kiram for help, like we ask Awliya Kiram for help, like we ask the other Mu'mineen for help. So those are not bizat helpers. Those are the people, they help us with the power which is granted by Allah Tabarak wa Ta'ala to them. So that is called atai, gifted thing, God gifted thing. So this is the clarification. No Muslim asks for help to any wali, to any nabi, that he is the real helper. Without the help of Allah Tabarak wa Ta'ala, he can help. No, this is not the mind of any Muslim. Whenever we ask for help to anyone, so it means that awliya, anbiya, salihin, muttaqeen, all the pious people, they help the others by the granted power of Allah Tabarak wa Ta'ala. And this is a very common thing, like Allah Tabarak wa Ta'ala said in the Holy Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. You should help others in the way of goodness and taqwa. So in this ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala has clarified in a very clear way that all the Muslims, they should help others in the way of goodness, in the way of virtue. So if the help was prohibited at all, so why Allah Tabarak wa Ta'ala said to the Muslims to help each other? And this is a very common thing. Whenever we are in trouble, we ask for help to our parents, our teacher, our neighbors. So these all helps are in the second category, that is atai. So likewise, whenever a Muslim asks to Anbiya, Awliya, Salihin for help, so there is an imagination is that these all people, they help only by the gifted help, by the gifted power of Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is a misconception among the people. तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के दूसरे हिस्से में जो इरशाद फरमाया, तालीम दी गई व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। इसमें बड़ा ही प्यारा तसव्वुर है और मुसलमान का अक़ीदा है, ईमान है कि जब भी उसको मुश्किल हो, दुश्वारी हो, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाज़िरी दे, उससे दुआ करे। जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगना, ये मुसलमान की शान है। लेकिन यहाँ पर एक गलत फहमी का इजाला करता चलूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ही से मांगना चाहिए, इसके अलावा किसी से भी जो है मदद मांगना ये जायज़ नहीं, ये शिर्क है, खिलाफ़ तौहीद है। कोई किसी भी तसव्वुर से मांगे गलत है, ऐसा नहीं। उलमाए किराम ने मदद को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है मदद करना किसी की बिज़ात, जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए ख़ास है, कि अल्लाह तबारक व ताला हकीकी तौर पर मददगार है, वो बग़ैर किसी के दिए, बग़ैर किसी से लिए वो मदद फरमाता है। और दीगर अम्बिया, औलिया, सालिहीन, मुसलमान, मुमिनीन जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, वो है अताई मदद, कि अल्लाह तबारक व ताला की दी गई अता से जो उनको ताकत है, उसके ज़रिए वो मदद करते हैं। और ये मदद बड़ी ही आम है। अगर ये कहा जाए कि खुदा के अलावा किसी से भी मदद मांगना शिर्क है, किसी भी हाल के अंदर, किसी भी जहन के अंदर, तो डूबते वक्त कोई शख्स किसी के मदद को पुकारे तो उसका ईमान कहाँ रहेगा। इसी तरह बीमार होते हैं तो डॉक्टर से मदद तलब करते हैं, सवाल में मुश्किल होती है तो उस्ताद से मदद तलब करते हैं। तो ये तमाम जो मददें हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब की सब दूसरी किस्म के अंदर हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हकीकी तौर पर मददगार है, और बकिया जो अम्बिया, सालिहीन और मुमिनीन या आम लोग जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो बिज़ात नहीं
बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की अता से करते हैं। और हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला की अता के बग़ैर, उसकी दी गई ताकत के बग़ैर कोई शख्स, खा वो नबी ही क्यों ना हो, वली ही क्यों ना हो, एक पत्ते को भी हिलाने की ताकत नहीं रखता। जो कुछ भी है अल्लाह की अता से। तो ये ज़ाती और अताई का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे लोग यहाँ पर इस आयत से गलत फहमी का शिकार ख़ुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने तो जा बजा दूसरों की मदद करने का हुक्म इरशाद फरमाया। अहादीस भरी पड़ी हैं गरीबों की मदद करने के फ़ज़ाइल पर, मुश्किल में किसी की जो है वो मुश्किल कुशाई करने के जो फ़ज़ाइल हैं वो सब दूसरी ही किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और किसी भी मुसलमान के ज़हन के अंदर यह हरगिज़ नहीं होता कि मैं अगर किसी से मदद तलब कर रहा हूँ तो वो हकीकी तौर पर मदद करने वाला है। नहीं, हकीकी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला मदद फरमाने वाला और उसकी अता से तमाम दूसरे लोग मदद करने वाले हैं। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आया, उलमाए किराम हैव सेड अ वेरी ब्यूटीफुल अनदर थिंग। दे सेड दैट दिस आया, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फर्स्ट ibadat is mentioned, worship is mentioned, and after that nasta'in, isti'anat, to ask for help, dua, prayer, that is mentioned. It means whenever we worship Allah Tabarak wa Ta'ala, so just after that, that is the time of exception. Allah Tabarak wa Ta'ala accepts the dua of that moment who perform dua, who makes dua just after the worship. That's why after the completion of salah we make dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. Whenever we do any virtue, so just after that we make dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, because that is the time of acceptance. So whenever we perform salah, whenever we do any good deed, so that is the time of acceptance. इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इहदिना, guide us, guide us in the straight path. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, the path of those whom you have favored. So it is also a dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. We are asking for steadfastness on the right path. First we claimed that, O Allah Tabarak wa Ta'ala, we worship you and we ask you for help. So this is our iman, this is our aqidah, and we worship only you. Just after that, now a Muslim, he is asking that, O Allah Tabarak wa Ta'ala, you have showed us the right path, that's why we worship you. Now we are asking for steadfastness, that please give us istiqamat ala deen. We want to be on that path until the day of judgment. So that's why it is a very beautiful dua. Ihdina siratal mustaqim, sirat mustaqim, the right path. So just after that, there is another very beautiful thing. What is the right path is, where we can get the right path. What is the way, if we will walk on that way, so we will reach the right path, we will reach to our goal. So sirat al-ladhina an'amta alayhim, that is the explanation of the right path, that the right path is the path of those people whom Allah Tabarak wa Ta'ala have blessed. Those are pious people, those are Anbiya, those are awliya, those are sahaba, those are salihin, those are muttaqeen, the pious people. So the dignity of those people is the one who follows their footsteps, so he is on the right path. So this is a very beautiful dua, and this is a very beautiful explanation for us as well. तो अल्लाह तबारक व ताला ने इबादत, उससे मदद मांगने के बाद सीधे राह पर चलने की, सीधे राह पर रहने की दुआ हमें तालीम फरमाई, हमें सीधी राह चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ओ अल्लाह हमें सीधी राह चला,
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے، اور اس کے ضمن کے اندر علماء کرام نے بہت کچھ بیان کیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مومن ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مومن رہنا چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ جو تو نے ہمیں دکھائی۔ اب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو دیا، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک اسی راستے پر چلا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تعلیم فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، شہداء ہیں، وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں کہ ان کی مقام اور ان کی عظمت کا کیا کہنا، جو ان کے راہ پر چلے گا وہ بھی ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اپنے بزرگان دین کی پیروی کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس طرح سے دعا مانگو کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ So this was the summary of these some ayat karima. Inshallah Azza wa Jal, in the next silsila we will try to learn about the rest of the ayah of this Surah Fatiha. So let's move to the last segment of the silsila, and that is very important. In this segment we learn the important vocabulary of the day. So the important vocabulary of the day is na'budu, we worship; nasta'een, we ask for help; ihdina, guide us; sirat, path; al-mustaqim, straight; ta'awanu, help each other; bir, goodness, virtue; khalaqtu, I have created; jinn means jinn; ins, men; ud'uni, you ask me; astajib, I accept. So this was the important vocabulary of today's silsila. Inshallah Azza wa Jal, in the next silsila we will come and learn about the more ayat of this Surah Fatiha. So keep watching Madani channel. Inshallah Azza wa Jal, you will be blessed by the knowledge of Deen. May Allah give us tawfiq, power to act upon the verses of the Holy Quran. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala. Let's learn Quran. Let's learn